basically what is AI Dash about? Okay. So AI Dash is basically a B2B company which offers a SaaS platform to the utility companies to help them efficiently manage their vegetation uh, and their resources. Their main domain is basically a term called vegetation management. So, in from an Indian perspective, you won't get a sense of it because India में ये उतना relevant नहीं होता. But when you go to countries like United States, where the things are a little bit more organized, so वहाँ पे vegetation management is a very important thing. So AI Dash क्या करती है कि AI Dash uses basically satellite images and artificial intelligence to provide recommendations to the utility companies to help them in their vegetation management. And apart from this, they also work in sustainability and uh, disaster management as well. So, yes. Coming to Nimeshadi. Yeah, sure. Hello, everybody. Am I audible clearly? Abhinav, can you confirm? Uh, Yeah, sure. So, naam to bataiye. My name is Nimisha, and I'm currently interning at a stealth startup. So, all I can tell you is that it's working on an edtech industry. Cannot tell you much, but it's been an amazing experience abhi ke liye. Stealth mode mein hai, so most of the work has been remote. And specifically, agar bolu to it's a startup culture. So, like a lot of work has no boundaries. You're supposed to do as much as they give you. So particularly product management, everything like apart from product customers, everything comes under it. So abhi ke liye it's been an amazing experience, and we'll tell you more about it as you guys ask questions, you'll know more. So yeah. Coming to Baba Bhaiya. Hello everyone, Vaibhav this side. तो काफी लोग जानते होंगे, but for people who don't know, I was acting vice president of Share IIT previously, and abhi currently I'm working in Matchmove as PM intern. And देखो, I am mostly comfortable in both English and Hindi, but क्योंकि हिंदी में ज्यादा connect होता है, so I prefer speaking in that. So it will be mix of that. So अगर किसी को दिक्कत है तो please confirm in chat. But more or less it will be kind of English, right? So coming to what we do as PM interns. So as a PM intern, my task is multifaceted. जैसे we have to work sometimes on design side, and we have to work sometimes on data side initiatives. And all in all, we have to analyze what is the scenario, what is the requirement across all domains, and channelize it to the tech team. जैसे हर team में everyone is aspiring to become, most people are aspiring to become SD. So basically SD के लिए जो requirements होता है उसको pan out करना is the role of a PM. And all in all, अगर मैं सबके लिए summarize भी करूँ तो more or less हमारा काम वही रहता है, understanding the business side of the company and combining it with along with our insights. We prioritize requirements and development activities for dev team, right? So more or less उसी काम रहता है. And since Matchmove is a fintech company, तो more or less तुम्हारा काम regularized होता है, तुम बहुत सारे regulations के under आते हो, right? So be it from government side, be it from payment side. So yeah, अलग-अलग जगह पे there are different flavors of PM. More on this towards the end of the session. So yeah, that's pretty much about me. Before visiting the LinkedIn page of Matchmove, I was like it is some matchmaking site or something. So coming on to Utkarsh Bhaiya. Yeah. So could you just confirm? Am I audible? Yes, Okay. So hello everyone. Myself Utkarsh. I'm currently fourth year undergrad in chemical engineering, and I'm currently interning at Stealth Tech, like same as Nimisha said. And yeah, the company introduction is the same as well as Nimisha. We just like to work in a kind of closed startup system. Like there's no boundaries of your research and what the input you can give. You can do all the research work, all the product work at the same time. So yeah, moving towards the session. so generally students from the second year who have just entered the third year are very confused about this PM profile. Can you briefly explain the common idea and what the role is all about?
Nimisha, go ahead. Yeah, I think Vaibhav did cover a lot of it. The work he mentioned is something that corporate PMs generally follow. That's how it streamlines. You have to pan out the work for SDs, design and everything. You have to incorporate multiple, basically product की सारी चीजें you have to include in it. ठीक है, product में जितनी चीजें आती है, whether it be UI UX, whether it be क्या components होने चाहिए, metrics क्या होनी चाहिए, like everything comes within that. As a startup, where I am interning, my span is not limited because I have been multiple चीजों में involved रहते हैं, startup है, कम interns होते हैं, so you have to work a lot. My work specifically, if I talk about, is that mainly it involves working on customers abhi ke liye, because it's in a very initial stage. So very important to understand ki do customers actually need the product or not. So the first question, the customer relations, that comes into picture. And the second thing is building the product, the basics of product. What should be the content you display on the product. So my work has been this so far. I think इसके ऊपर elaborate, सबके अलग अलग मैनेजर्स के हिसाब से अलग अलग अलॉटमेंट ऑफ वर्क होता है. आई थिंक संभव एंड उत्कर्ष एंड वैभव कैन elaborate more on this. So Yes, sir. any add-ons? Utkarsh bhaiya, you can continue. अच्छा ठीक है. So like my work is currently revolves around the coding part of the like the platform we are building. We want to incorporate some coding curriculum in our platform. Like as Nimisha told that it is a edtech platform. So we want the K-12 kids to learn coding at the early stage. And currently I'm also working upon the product analytics side of the company. How should we integrate the Google Analytics? Should we use the Mixpanel or Tableau for that, or we can move ahead with Google Analytics? And we are just covering key what should be the event data points and checkpoints for the customer journey. And like we are also working on segregating the user funnels. What are the different levels at which the customer can operate, so that we can take the data of the user behavior from our platform. So currently I'm working on the product analytics side. Yeah, Baba, you can go ahead. या तो सब दो अलग अलग एक्सपीरियंस तुमने ऑलरेडी सुन लिया है. तो बिफोर आई मूव अहेड, एक चीज पूछना था सबसे कि कितने लोग प्राइमरी प्रोफाइल के लिए पीएम को देख रहे हो इस इंटर्न सीजन में. आई जस्ट वांट अ हैंड रेज फॉर दिस. हैंड रेज तो कर ही सकते हैं ना अभिनव? कर हाँ सकता था. भास्कर भी देख रहा है. हैंड अभिनव भी देख रहा है भैया, हम दोनों ही देख रहे हैं. हाँ, मेरी चल जाएगी तुझे. Yeah, Okay. there are around 5 people. तो 5 लोग प्राइमरली पीएम को देख रहे हैं. फॉर अदर्स आई बिलीव कि तुम्हारा सेकेंडरी प्रोफाइल या फिर एक्सप्लोर करने के लिए ऐसा देख रहे होगे. इज इट द केस जो लोग सेकेंडरी या टर्शियरी प्रोफाइल के लिए देख रहे हैं पीएम को? I guess question clear. Huh? Those who are like considering PM as a secondary option, they could raise their hands. Primary and secondary both. ओके. सो बिफोर मूविंग अहेड, मैं बता देना चाहता हूँ कि प्राइम मोटिव ऑफ दिस सेशन इज कि अगर तुम इंटर्न में बैठ रहे हो पीएम प्रोफाइल के लिए, या फिर अगर तुम्हारे दिमाग में है कि बैठना पड़ सकता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या रोड मैप रहेगा, क्या प्रेपिंग मेथड्स रहेंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे. सो फॉर पीपल हु जस्ट वांट कि पीएम क्या है, कैसा है, दे माइट आल्सो गेट डिसेंट एक्सपोजर टू दिस. बट फॉर पीपल हु वांट टू सिट फॉर एसडी रोल्स या अलग अलग रोल्स, आई डोंट थिंक इतना ज्यादा इंसाइटफुल होगा ये सेशन उनके लिए. ठीक है, तो यू कैन कंसिडर टू ड्रॉप आउट. ठीक है, तो मूविंग अहेड, द फैक्ट इज पीएम का रोल डिफाइंड नहीं होता. टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीएम का रोल डिफाइंड नहीं होता. अलग अलग कंपनी में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वहाँ के पीएम्स होते हैं. जैसे उत्कर्ष ने कहा, उत्कर्ष वर्क्स वेरी क्लोजली टू इंजीनियरिंग साइड ऑफ टीम.
और निमिषा ने जैसे कहा उसका काम काफी ज्यादा इज टुवर्ड्स द मार्केट साइड, स्ट्रेटेजी साइड ऑफ पीएम. So similarly, Sambhav might have some other experiences. तो बहुत बार ऐसा होता है कि there are data side initiatives like जो डेटा कंज्यूमर से आ रहा है, ठीक है, उसको तुम्हारा टीम का जो डेटा साइंटिस्ट होगा या फिर डेटा एनालिस्ट होंगे, वो डेटा को मतलब क्लीन करके उससे इंसाइट्स जनरेट करेंगे. उन्हीं इंसाइट्स को हमें मैट्रिक्स के फॉर्मेट में देख के एनालाइज करना है कि क्या क्या हो सकता है इसमें, बिजनेस इंसाइट्स क्या क्या निकल रहे हैं. सो दैट माइट बी वर्क ऑफ ए डेटा पीएम. वैसे कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पीएम होता है, उनका काम ये होता है कि दे वर्क वेरी क्लोज टू सेल्स टीम. तो कंज्यूमर से क्या क्या इंसाइट्स आते हैं उनसे डायरेक्ट लिंक करते हैं. जैसे तुम बहुत बार अपने कंसर्न्स बताते हो कि मेरा फ्रिज काम नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है. सो मोर और लेस सबका ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि पीएम इज अ वेरी सास काइंड ऑफ थिंग. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बोथ सास में और सर्विसेज में पीएम इज इक्वली अवेलेबल. ठीक है, तो मतलब डिफरेंस बस इतना आ जाता है कि जो ऑफलाइन प्रोडक्ट्स देखते हो तुम्हारे घर में, जो साबुन देखते हो या फिर छोटा सा ऑब्जेक्ट को कहूँ तो साबुन, या फिर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स लाइक एसी, फैन, उन सब के उन सब टीम में एक एक पीएम होता है. ठीक है, बट डिफरेंस ये हो जाता है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स में जितना हम जल्दी से वर्जन रिलीज करते हैं, कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में एक वर्जन आ गया, अगले महीने दूसरा वर्जन आ रहा है. बट ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स में ये सोच के बनाना पड़ता है कि 3 साल तक ये किसी के घर में रहेगा, राइट. सो वही डिफरेंस आ जाता है ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स में. तो इसीलिए अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स बन जाती है. इट इज नॉट वेरी मतलब वेरी सिंपल रिक्वायरमेंट कि हाँ मुझे इस चीज के लिए कोड करना है, सो मुझे यही प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, राइट. सो इसीलिए बहुत सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए. तो बेसिकली अगर मैं डिफाइन करूँ व्हाट इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इट इज समथिंग दैट इज इन क्रॉसरोड्स ऑफ बिजनेस, डिजाइन एंड टेक, जो बहुत बार आप सबने सुना होगा. तो बेसिकली यही काम होता है पीएम का. एंड टू बी अ गुड पीएम यू हैव टू मास्टर all of these domains. Yeah. So that was more or less about my experience. Swapnil. Okay, so I think like regarding what the PM does, so Nimisha, Utkarsh, and Vaibhav has already told it. So one point I would like to highlight again, कि for the PM there is no fixed boundary. You cannot define the job of a product manager with a like fixed definition. हर company में अलग अलग होता है, as Vaibhav pointed out. So regarding my role in AI as an APM intern, so basically I am working on a project which deals or which is about building a plugin for a software which is used by the company, right? So company में एक GIS टीम होती है. तो GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो जो सिविल से होंगे उन्हें पता होगा. तो those people use a software called QGIS, और उसमें we are building a plugin for it, and the job of the plugin is to basically track the user activity of the employees, right? So though तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि the primary role of this feature or this plugin is to monitor the efficiency of the employees, but it is something more than that. उसमें थोड़ा उनके जो AI मॉडल्स है उनको इम्प्रूव करने में भी this would help. So regarding what I actually do as a APM, so most of my day is spent in interviewing the GIS agents. How do they actually do the work in that software? What are the pain points they are facing? Then coming back to my table and drawing insights from it. Then validating those insights again to the with the GIS employees, and then communicating my conclusions with my manager, whether I am going in the right direction. So basically, I am doing all this to make a PRD of this plugin. Like, so PRD is basically a product requirement document, and if needed, we can dive deep into it. Like, what is it in the upcoming session. Okay, so yeah, next question we have is for all the newbies like who are trying to get into product management, what would be a good starting point? Like if we can continue with you on this, Swapnil Via. Like it depends on your level of preparation or level of exposure to PM right now. So for someone who is not at all experienced in PM, या फिर जिसे पूरा भी experience नहीं कि what is actually a PM.
So you can follow two ways from here. One is basically more towards intern oriented. You want the internship. तो उसके लिए you should focus more on the interview preparation. कि interviews में क्या क्या questions पूछते हैं, what are the case studies asked in the interviews. तो उसके लिए like we can talk more about it in the upcoming in upcoming. And बाकी if you want a overview of what product management is, so there are many steps. One is to start taking part in case study competitions, start developing a business acumen by reading articles, newsletters, and even books if you have time. Like so, these are like few things which you can start off. Over to Dimisha, Utkarsh, and Rakesh. If you would like to add anything to it, Nimisha Didi. Yeah. So basically, my starting point was also case studies only. So I would also suggest if you really want how to begin, go on D2C, go on PM School, pick out any case study and start working on it. So there is, matlab, if you talk about, as Vaibhav said, there is no limit to the amount of work a PM does. So you cannot define what syllabus you should cover, what you should cover, what you should exactly not cover. That is difficult. We have certain resources, but that is a little difficult. The best way is go out to these websites, pick out a case study, work on it. Do not know how to do it, Google it, find out ways, find out resources. How do people do it? See videos as much as possible. Up to AI bhi hai. So easy to get solutions, right? So explore. Jitna much you explore in product, utna is less. So just keep exploring, keep doing case studies. There'll be a point where you realize you actually like to do this, and there'll be a point you realize you do not like to do this. That is where you have to make a decision if you want to go ahead with this, if you don't want to go ahead with this. Agar aage jana hai, so there are certain resources you should follow, certain methods you should follow. That is a different thing. But beginning mein, I do say ki case studies try out karo. That is my point. So, am I audible now? Yes, please. So same for me. I was also doing case study in my first year, so I got to know that there is something on Unstop, which was at that time it was Dare to Compete. There are some case study competitions, and like our friends were used to let's team up and just participate. We didn't know what is case study, what is business and all, and how to come up with solutions and how to present it. So we just asked our seniors okay, we like are inclined towards the business part, and we want to go for the case study. So how should we do that? So first of all मैंने like first year में seniors को तो से guidance ली मैंने कैसे case study करनी चाहिए. Then second I went on the Google. Like Nimisha said internet is just a plethora of kind of knowledge, so you have to just Google it how to do case study. Even the chat GPT also, like I guess yesterday or some other day I just searched how to like prepare a good day for a product tear down. So it just curate all the things that you needed. First you have to do user research, then market research, then all. So I would say yeah, just start exploring, just start searching. कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, then ask someone, ask on the chat GPT, ask on net. You just have to explore anything. Bhaiya, any add-ons or we can move to the next question? Move to the next question. I think it's Okay. Okay, so could you please elaborate on the hiring pattern of companies which come for internships in our college? Okay, so I'll answer this. So first of all, you must accept this fact that on-campus PM opportunities are very less. So my company, that is AI Dash, so usme, what happened was that there were 3 rounds. First round mein they basically asked aptitude, which had some questions about probability and statistics as well. Second round was more inclined to what actually a PM round actually looks like. So usme I was asked question on my resume, my projects, and since AI Dash is inclined towards artificial intelligence, so one of my projects had an application of ML. So I was also asked a few like very basic questions regarding ML as well. And coming to the case studies which are asked in the interview, so I was asked a guesstimate.
then a favorite product question, which is a like very common case study in PM interviews. And and then he dived deep into that case study only. How will you improve this feature? What would be the North Star um, like this thing metric of this feature, right? And how will you improve it? And then all this. And finally, in the third round, so it was a tech round taken by the VP of PM, but it looked more like an HR round because mostly the questions revolved around my projects and other PURs only. So yes, this was my experience about the on-campus. Hi. बाबा भैया देखो आई हैवंट मतलब मैं अभी तक बैठा नहीं हूँ ऑन कैंपस राउंड्स के लिए बट माय एक्सपीरियंस इज मोर टुवर्ड्स द ऑफ कैंपस पार्ट तो डू यू वांट मी टू कवर अभी या फिर ना बाद ना में ना that will be coming नहीं later. ऑफ तो कैंपस निमेश वाले अभी क्वेश्चन होंगे. Okay, then हाँ I'll just advance. हाँ So in my interview, the interview started with the guesstimate. The exact question was ki estimate the number of I guess flights from Delhi airport. So the first question was guesstimate. Then we moved to the kind of resume grilling. They asked ki what are your projects, what you did in that. Then what was the impact of your project? How did you come up with the solutions? So like my resume revolves around a lot of startups. So they then asked ki like are you aware of the startup world? Like do you follow the any current market trends? So then I said, ki, yeah, I just follow and read articles about the startup culture and how the kind of business works in the startup culture and the products are built in a way such that the customer is kind of get satisfaction. So I kind of elaborated on that ki, why my kind of ki, the resume revolves around the startup. And then they started ki, why did you break into PM? Ki, why did you wanted to go for PM when others are going for coding? So that I had to answer. And then mostly it was rest of the interview was kind of resume grilling and some questions on PR and some question on HR. Okay, tell me about your weaknesses. Tell me about a time you had a very difficult time and how did you come up with. Then there was a question that I didn't go as prepared. Tell me about a person you most envy and what can you do about it from your college life and from your batchmate. सो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें मतलब तुम्हें ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ेगा. लाइक यू फर्स्ट यू हैव टू टेक टाइम कि ओके आई जस्ट थिंक अ बिट मिनट, कुड यू जस्ट गिव मी सम टाइम. तो ऐसे सोच के तुम्हें उससे टाइम ऑन द स्पॉट तुम्हें बोलना रहता है 5 मिनट के लिए कि तुम ऐसा क्या बोलोगे, क्या पॉइंट्स रहेंगे तुम्हारे. तो फॉर डैट I guess you could use the STAR framework, ki situation, task, action, and result. Ki what was the situation that you got envy with the person? Then task, action, and result. Ki like तुम्हें at last दिखाना है कि मैं भी अच्छा हूँ वो भी अच्छा है. You can't tell them कि I envy because he was bad at the time and I was good. So kind of last में से दिखाना है कि okay at the last we both on the same ground. So yeah, that was kind of my HR round, and then I guess there were 2 rounds. So in my first round, it was just the resume grilling, some HR questions, and then guesstimate and things revolving around product and startup world. And in second round, it was just HR. That they were asking my life goals, then my college life, like what I did in my clubs, how much I was active in that. So second round was all HR, and I guess the total duration of my both rounds, I guess, added up to 3 hours. So like my first round was around 1 hour 20 minutes, and second one was 1 hour 45 or 50 minutes, I guess. So this was my experience. Devi, would you like to add on to the question or can we move forward? I'll just quickly add on one thing. My experience was towards a startup. I actually worked on a startup idea in my second year. So most of my interview went in that phase only because they were particularly people looking for startup. Okay, and they had certain cultural fits. They had certain cultural measures. So my interview went on a very conversation kind of thing. Interview नहीं लग रहा था वो मुझे. Most of it was like conversation. कि अच्छा you did this, you did that. तो startup में तुमने फिर आगे क्या किया? Why did you leave it? Why did you stop working on it? या फिर work किया तो फिर ऐसा क्यों किया? या industry खराब क्यों लग रही थी? या industry खराब नहीं थी तो फिर छोड़ा क्यों?
lot of questions on the startup going on. मतलब पहला interview was entirely about the startup. They only asked me one guesstimate, and then the entire interview was behavioral questions and the startup. So 2 things to remember: be very specific about your resume. Do not lie in your resume. जो किया है वही लिखना. And secondly, practice behavioral questions. Now, for some people, this might be something एकदम top पे रहता है उनके लिए. It's very easy to talk to people for some people, but for some it's not. So practice it. Do not take it lightly. It's very important. Second interview was not about my startup experience. Second interview went into a little technicalities because I had some of analytic stuff with me as well. मेरा background थोड़ा data analytics वाला भी है. So I had certain projects there as well. So they asked me questions थोड़ा बहुत उसके ऊपर, explain एक दो project. Then later on, again उन्होंने मुझसे guesstimate पूछा था, which was a very easy kind of guesstimate कि how many burgers are produced in McDonald's. Then again it went to like similarly on Utkarsh rounds went on like 1.5 hour. काफी लंबा interview चला. Most of it covered behavioral questions end में again. So yeah, that was it. So moving on to the next question. What would you say is the correct time period to start preparing for intern? Like from the starting of second year or 2 months before the intern test, 3 months, 4 months, like that? I guess this is the perfect time to start for the PM. Like it's not, you need 1 year or more than that. So you can just start with the summer intern, like summer period, and you can just ace for the interview or not. There's nothing about that. Many case studies are like being organized by different communities and organizations in this period. So you can vouch for that. I would like to add something. So in product management, you can see it in like two perspectives. One is the interview perspective of PM, and second is the actual job of the PM, right? So जो interview वाला part होता है, that basically covers two particular types of case studies. Right? You need to know how to solve them, some framework, right, which come handy while solving them. So like you can easily learn and cover the interview part in 1 to 2 months. Like 1 to 2 months are more than enough for it. And after that, you have to do some mock case studies to practice your case study solving skills. Regarding the second part, which is actually what does a PM do? So उसमें बहुत कुछ technicalities आ जाती है, like writing a PRD and all that, but which is not required at this stage. But what you can develop in that aspect is that develop a structured thinking approach, develop a first principle thinking, right? So basically, by developing, I do not mean using them only while solving case studies. Use them in your daily life as well. राइट आपको आप किसी क्लब के पीआर पोजीशन को होल्ड कर रहे हो तो अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल थिंग देयर आल्सो राइट so the best way to learn this is by practicing it and reading about it and there is no end goal or a fixed time period जिसमें आप ये सीख सकते हो so like developing these soft skills like you can keep developing them as you go on in your journey so Anything you would like to add on, Vaibhav here? हाँ नहीं, मोस्टली सिमिलर. तो रफली जो दो पार्ट्स में इसको अपने लिए डिवाइड किया, वही दो पार्ट्स हैं कि एक हो गया इंटरव्यू प्रेप, जो तुम 1-2 महीने में कर सकते हो, बट काम सीखने के लिए तुम्हें रेंजिंग फ्रॉम वो महीने टू साल भी लग सकते हैं, कि करने को बहुत सारा काम है, जैसे हैंडलिंग पीआरडी हो गया, कुछ कुछ तो हमने डिस्कस ही किया. काम सीखने को काफी टाइम लग सकता है, वो तुम ऑन द वे ही सीख सकते हो, बट टू लैंड अ जॉब और टू लैंड एन इंटर्न तुम 1-2 महीने में प्रेप कर सकते Moving on, what are the opportunities for PM in an off and on campus setup? हो. I'd like to take this up. देखो, ब्रूटल ऑनेस्टी इस चीज का ये है कि जैसे मैंने तुम्हें सिनेरियो समझाया कि क्या है कंपनीज का, तो जनरली ये ट्रेंड देखोगे तुम कि कंपनी में बहुत सारे एसटीज होंगे, बट टू चैनलाइज द थॉट बहुत कम पीएम्स चाहिए होते हैं. ठीक है. एंड अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, तो पूरे फ्लिपकार्ट एपीएम प्रोग्राम में हर साल बस 12 से 16 लोग जाते हैं. ठीक है. तो 12 से 16 अक्रॉस अ नेशन इज रियली कम. ठीक है, एक बहुत बड़े कंपनी में. तो बेसिकली बाय द नेचर ऑफ जॉब इज वही कि
काफी कम रिक्वायरमेंट होता है, तो इसीलिए ये चीज काफी रेयर बन जाता है। एंड अगर मैं इसका वैल्यू या कंपनसेशन टाइप में बोलूँ आपको, तो दैट इज मोर और लेस क्लोज टू एसटी, ठीक है। नॉट एचएफडी वाले साइड नहीं कह रहा हूँ, बट एक डिसेंट अमाउंट तुम पा जाओगे पीएम साइड में। तो अगर हम ऑन कैंपस सेटअप में जाए हमारे कॉलेज के लिए, पीएम और बिजनेस डोमेन्स आर रिलेटिवली न्यू, ठीक है। तो ऑन कैंपस सेटअप में काफी कम कंपनीज आते हैं और वो धीरे धीरे आते हैं। जैसे स्वप्निल के लिए एयरडैश भी थोड़े बाद में आया था, एंड इवन स्टेल्थ स्टार्टअप भी काफी बाद में आया था। एंड वी आर नॉट प्रिटी श्योर कि ये कंपनीज इस साल आएंगी या इस साल और कोई कंपनीज आएंगी, कुछ आइडिया नहीं है इसका। तो जो ऑन कैंपस इंटर्नशिप वाला है, तो उसके लिए तुम प्रिपेयर्ड रहो। जो जो स्टेप्स तुम्हें सबने कहा, कीप दैट इन माइंड। बट ऑफ कैंपस के लिए तुम्हें थोड़ा सा अलग तरीके में फाइट मारना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑफ कैंपस में अगर मैं बोलूँ, तो जो जो कंपनीज नहीं आती कॉलेज में, सब तुम्हारे लिए खुली, ठीक है। कंपनीज रेंजिंग फ्रॉम जो अभी अभी जिनको फंडिंग मिला है, जो सीरीज एक, मतलब फंडिंग के टर्म्स में बोलूँ तो देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फंडिंग, जिनको जो शार्क टैंक में जो कंपनीज आते हैं, सब बहुत लोगों ने देखा होगा। दे रेंज फ्रॉम सीरीज ए टू सीरीज बी, ठीक है। एंड उस हिसाब से अलग अलग टाइप के कंपनीज होते हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट यूनिकॉर्न्स, ठीक है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट लेट मेच्योर फेज वाले कंपनीज, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे यू हैव अपॉर्चुनिटीज फॉर पीएम। एंड बहुत सारे डिस्टिंक्शंस भी है, जैसे मैंने एक बोला ऑफलाइन ऑनलाइन, वैसे एक और डिस्टिंक्शन है कि एक बी टू सी कंपनी हो गया या बी टू बी कंपनी हो गया। मतलब बी टू सी कंपनी जो कंज्यूमर्स को सर्व करता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, और बी टू बी जो बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो उस हिसाब से अलग अलग जगह पे तुम्हें कंपनीज मिल जाएंगी। बट फॉर ए गुड स्टार्ट, तुम एक अच्छे से स्टार्टअप में जाके काम सीख सकते हो, ठीक है। दैट विल बिल्ड अ बेस फॉर यू। तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा उसका कि क्या काम है पीएम का। देन यू कैन गो टू एनी कंपनी रेंजिंग फ्रॉम यूनिकॉर्न टू कंपनीज, जहाँ पे भी तुम्हारा मन करे, ठीक है। सो कमिंग टू ऑफ कैंपस में पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो इट इज मोर और लेस सिमिलर टू ऑन कैंपस के पैटर्न्स, बट ब्रीफली अगर मैं बोलूँ तो पीएम इंटरव्यूज के लिए राउंड्स कैन बी एज लो एज 2 राउंड्स, बट एज हाई एज 5 to 6 राउंड्स, ठीक है। तो पहला राउंड इज मोस्टली तुम्हारा एनालिटिक्स वाला पार्ट चेक करने के लिए होता है, ठीक है। एंड दैट माइट हैव क्वेश्चंस ऑफ नॉर्मल एप्टीट्यूड या फिर कंपनी रिलेटेड। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो भी कंपनी के लिए तुम बैठ रहे हो, डू एम्पल बैकग्राउंड रिसर्च उसके प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले। जैसे स्वप्निल ने कहा कि उसके लिए जीआईएस टाइप के क्वेश्चंस थे, तो वैसे हर कंपनी के लिए अलग अलग, मेरे लिए इंटरव्यू राउंड्स में फिनटेक के लिए क्वेश्चंस थे, इवन इन द फर्स्ट राउंड। तो थोड़ा सा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नाउ आफ्टर ये वाला राउंड, नेक्स्ट राउंड में मोस्टली तुम्हारा टेक, पीएम टेक वाला सेटअप शुरू हो जाता है। एंड एक बार हैंड रेज करो कितने लोगों के पास अभी कॉपी पेन है जो सेशन में बैठे हो। भाई हार्डली बहुत कम लोगों के पास। अभी तुम्हारे पास 2 मिनट है, कॉपी पेन लेके आओ। ये तो सेशन का चीज वही हवा में होगा, हवा में चला जाएगा, ठीक है। एंड मोरलेस पीएम का पहला काम भी यही होता है कि डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड टेकिंग आउट इनसाइट्स। तो अगर तुम डॉक्यूमेंट ही नहीं करो, इनसाइट कैसे निकालोगे? तो यू हैव 1-2 मिनट्स, जल्दी कॉपी पेन लेके आओ, उसके बाद आगे का प्रोसेस में अंदर जाएंगे। भास्कर, अभिनव, आई गेस सबके लिए माइक्स एनेबल कर दो। दैट विल बी हाँ गुड, क्योंकि हाँ अटेंडेंस भी ज्यादा हाँ नहीं है, तो वी कैन डू दैट, yes. ठीक है। एज्यूमिंग दैट अभी पहले से कुछ लोग तो ज्यादा कॉपी ला चुके होंगे, आई तो थिंक ऑडियंस के लिए माइक एनेबल है। कोई एक कंफर्म कर सकता है हाँ ऑडियंस में से? हाँ सिमर? मैंने कर दी। हेलो। चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, सही है। फाइन सर। ठीक है, ओके। तो पहला पार्ट जो इंटरव्यू में आता है, इज बेसिकली टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हर इंटरव्यू में आता है कि तुम अपना इंट्रो दो, बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, ठीक है। तो भास्कर, अभिनव, टेक अ नोट ऑफ दिस। थोड़े और क्वेश्चंस को कवर कर ले रहे हैं इसमें, ठीक है। तो या तो पहला चीज जो होता है अपना इंट्रो देना, ठीक है।
वहां पे तुम अपने बारे में क्या क्या काम करा हुआ है उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है तुम्हारे रेज्यूमे या तुम्हारे प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। उसमें तुम, पहला चीज जो निमिषा ने कहा कि झूठ मत बोलना, जितना करा हुआ है उतना बोलना। कि अगर तुमने कुछ करा नहीं है जिसको तुम डिफेंड नहीं कर पाओगे उस सेटअप में, वो लिख दिया है वहां पर और तुम वहां पर डिफेंड नहीं कर पाए, थोड़े से यूज नेगेटिव करो, ठीक है। तो दूसरी चीज में आ जाते हैं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स और तुम्हारे एक्सपीरियंसेस जो जो हैं वो इस पार्ट में कवर हो जाते हैं। एंड पीएम के लिए एनी प्रोजेक्ट्स दैट आर, मतलब वो 3 डोमेन्स मैंने कहा था ना शुरुआत में, तो प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डेटा या टेक, ठीक है। चाहे वो एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट हो गया या फिर कहीं ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे तुमने एक्सेल या सीक्वल कुछ यूज करा है इनसाइट्स डिराइव करने के लिए, दैट वर्क्स। तुमने कोई स्ट्रैटेजी में प्रोजेक्ट किया है वेर यू आर अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस, ठीक है, दैट वर्क्स। या फिर तुमने कोई डिजाइन में काम किया है, यू हैव क्रिएटेड मॉकअप्स वगैरह, दैट वर्क्स। तो इसीलिए सबने कहा कि बिगिनिंग फेज में तुम केस स्टडी करो, क्योंकि केस स्टडी इन्वॉल्व्स सारा चीज। तुम रिसर्च भी करते हो, तुम डिजाइन भी करते हो, तुम वहाँ सॉल्व भी करते हो और तुम सोल्यूशन को प्रेजेंट भी करते हो, ठीक है। तो दैट इन्वॉल्व्स ऑल द टेक्निकलिटीज। तो नेक्स्ट पार्ट जब हो गया प्रोजेक्ट वाला, ग्रिलिंग खत्म हो गया, विल बी रिसेंटली डिड। जैसे अगर प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो निमिषा ने बोला अपना उसका स्टार्टअप में काफी पार्ट हुआ, दैट इज हर एक्सपीरियंस। तो उस हिसाब से तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर रहना पड़ेगा जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस है, बीट स्टार्टअप जिसपे तुमने काम किया है, बीट अ प्रोजेक्ट जिसपे तुमने काम किया है, बीट योर एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस जहाँ जहाँ तुमने काम किया है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड ऑन दैट। इसके बाद होता है PM 101, ठीक है। अब PM 101 में तुम्हारे लिए केसेस होते हैं। केसेस में देर आर 2 ब्रॉड टाइप्स ऑफ केसेस। पहला हो गया प्रोडक्ट डिजाइन। सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं तुम्हें प्रोडक्ट डिजाइन का, तो उसका यह है कि डिजाइन अ फ्रिज फॉर चिल्ड्रन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा। या फिर तुम्हें डिजाइन अ डिजाइन अ पेंसिल, दैट डिजाइन अ पेन दैट इज ऑटोमेटेड। तो कुछ भी क्रिएटिव हो सकता है, ठीक है। तुम्हें उसके लिए अपना पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा एंड देयर इज अ डिटेल्ड प्रोसेस। विल नॉट गो इनटू सो मच टेक्निकलिटीज, बट तुम्हें नेट में मिल जाएंगे सारे रिसोर्सेज, या फिर तुम किसी से भी पूछ लेना, मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हो गया एक टाइप ऑफ केस। दूसरा हो गया RCM। RCM ऐसा हो गया कि हमारे रूट कॉज एनालिसिस, फुल फॉर्म उसका वही है। और इसके क्वेश्चन टाइप्स ऐसे हो गए कि हमारे जो लिपड़ी वाले भैया है उनका धंधा सही नहीं चल रहा है, ठीक है। व्हाट माइट बी द रीजन बिहाइंड दैट, उसका रूट कॉज क्या हो सकता है। तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स लाइक दैट टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कि जिसका बहुत ही नीश सॉल्यूशन होगा। तो मैं क्वेश्चंस पूछ पूछ के वहां तक पहुंचना है एंड यू हैव टू बी वेरी स्ट्रक्चर्ड अबाउट दैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब तुम करते जाओगे केसेस, जब तुम बुक्स पढ़ोगे, जब तुम केसेस देखोगे अलग अलग जगह पे, तब तुम्हें सेंस बनेगा इस चीज का, ठीक है। एंड के तरफ में हम थोड़े रिसोर्सेज शेयर कर देंगे दैट विल हेल्प यू टू किक स्टार्ट योर करियर इन दिस डोमेन। बट हाँ, ये दोनों हो गए तुम्हारे प्रोडक्ट क्वेश्चंस पे PM 101 के नॉलेज के ऊपर। इसके अलावा हो सकता है क्वेश्चन प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या है, या बेसिक चीजें जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में होती हैं, वो क्वेश्चन हो सकती है। एंड एक इसके साथ साथ हो सकता है तुम्हारा एनालिटिक्स चेक हो सकता है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तुम्हें पजल्स पूछ सकते हैं वो, ठीक है। या फिर तुम्हें ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गेस्टिमेट्स। जैसे किसी ने शायद बोला था, उत्कर्ष ने, इनने। तो गेस्टिमेट्स में ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन बोलूं तो अभी वाराणसी में कितने व्हीकल्स होंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर, तो वहां पे भी वो तुम्हारा स्ट्रक्चर जानना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि तुम कितने अच्छे लीलावती हो, कितने अच्छे कैलकुलेटर हो कि कैलकुलेट करके बता दूंगा, वो नहीं चाहिए किसी को। सबको चाहिए कि कैसे तुम ब्रेक डाउन कर सकते हो इस प्रॉब्लम को कितने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो गेस्टिमेट्स हो गया, या फिर थोड़े और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में जाए तो वो मार्केट एंट्री वगैरह पूछ सकते हैं, जनरल केसेस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया PM 101 के बारे में। और पूरा लास्ट सेगमेंट जो इसका होता है, ठीक है, वो होता है HR क्वेश्चंस। HR क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। उत्कर्ष ने कई टाइप के क्वेश्चंस कवर करे, निमिषा ने कहीं के बिहेवियरल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो ये सारे आ जाते हैं HR में। कि और सिचुएशनल क्वेश्चंस, अगर तुम्हें इस सिचुएशन में डाल दे कि तुम्हारा कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, तो तब क्या करोगे। तो ऑल दिस रैंडम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बीच बीच में भी आ सकते हैं टू डेवलप स्ट्रेस ऑन यू, उन सब के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 4 टाइप के चीजें हैं जो अलग अलग राउंड्स में पूछे जाते हैं।
और राउंड अगर काफी क्लैरिफाइड होगा कि ये टेक राउंड है तो टेक वाले चीजें पूछे जाएंगे, अगर काफी क्लियर होगा कि एचआर राउंड है तो एचआर की चीजें पूछे जाएंगे, अगर कुछ बताया नहीं गया तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ठीक है। और ऑन कैंपस सेटअप में हमें थोड़ा सा आइडिया होता है, इन ऑफ कैंपस सेटअप तुम्हें ज्यादा आइडिया नहीं होता है, तो इट्स एडवाइज्ड कि तुम सारे चीजों का नॉलेज रखो और सारी चीजें डिफेंड कर पाओ। तो बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू से इज कि अगर तुम्हें इंटरव्यू फोड़ना है, ठीक है, तो यू नीड टू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस। तुम्हें नहीं पता कौन सा चीज कब पूछनी, ठीक है। सो यार दैट इज मोस्टली अबाउट दिस क्वेश्चन। बाकी इसको जो ऐड ऑन करना है इस पे कर दो प्लीज। एक सेकंड, बाकी कोई ऐड ऑन करे इसके पहले। भैया आपने जो बताया इसमें एक स्लाइड क्रॉस क्वेश्चन टाइप है कि आपने जैसे बोला कि इंटरव्यू में मतलब आपको डिटेल में पता होना चाहिए, तो ड्यूरिंग एन इंटरव्यू हमें लीड करने का ट्राई करना चाहिए टुवर्ड्स द डायरेक्शन दैट वी आर लाइक मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट, या हमें नेचुरल फ्लो में चलने देना चाहिए कि हाँ ठीक है आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, बट मैं कुछ भी ऐसे फेक नहीं कर रहा कि जो नहीं आता है उसके बारे में मैं बोलने लग जाऊँ। देखो इंटरव्यू में हमेशा वही है कि तुम्हें क्रॉस करना है उसको। अब लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर तुम काफी स्ट्रांग हो किसी टॉपिक पे, ठीक है, तो इट्स गुड हैबिट टू स्टेयर दैट अवे। अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो उस टॉपिक के तरफ, ठीक है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है मैं वो डिफेंड कर दूंगा, मैं उस तरफ में इंटरव्यू ले जाऊं। इंटरव्यू उसमें डीप डाउन जा चुका है क्योंकि तुम्हारे सामने जो बैठा है उसको 4-5 साल एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, ठीक है। तो उस हिसाब से सोचो कि तुम इसे किस हद तक डिफेंड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इट्स ऑलवेज सेफ, इट्स ऑलवेज गुड टू प्ले सेफ, ठीक है। बट अगर तुम एक एज दे पा रहे हो, अगर तुम्हें इतना एक्सपीरियंस है, तुम्हें लगता है कि हाँ मैं अगर ये बोल दूं कि मेरे को फिनटेक साइड में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो फिनटेक साइड के क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। अगर तुम बोल दो कि मुझे ऑफलाइन प्रोडक्ट्स का ज्यादा नॉलेज है, ऑफलाइन प्रोडक्ट्स के बारे में पूछेगा। अगर तुम बोलोगे कि स्टार्टअप का ज्यादा नॉलेज है, स्टार्टअप कल्चर के बारे में पूछेगा। तो इट्स अ जनरल हैबिट, बहुत लोग करते हैं, बट इट कम्स विद एक्सपीरियंस, मैं ये बोलूंगा। स्वप्निल भैया, योर थॉट्स ऑन दिस? आई थिंक वैभव ने ऑलमोस्ट काफी डिटेल में बता दिया। जस्ट फ्यू थिंग्स कि द चैनल्स ऑफ getting this off campus opportunity. So there are many channels in the market available. The best is LinkedIn, right? So LinkedIn may like you need to build a good LinkedIn profile, right? Especially if your profile is product management, right? That is first thing. Second thing is कि LinkedIn में एक job opportunities वाला section होता है, so वहाँ से you can always get some PM opportunities. थर्ड थिंग कि लिंक्डइन में व्हाट यू कैन डू इज कि इसका जो सर्च बार होता है वहाँ पे जाओ एंड जस्ट टाइप प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्नशिप। देन जब तुम सर्च दबाओगे तो इट गिव्स यू द रिजल्ट इनटू डिफरेंट बकेट्स। तो एक बकेट उसमें होता है पोस्ट का, तो इट शोज ऑल द पोस्ट जिसमें द कीवर्ड प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्नशिप हैज बीन यूज्ड। तो वैसे करके यू कैन ऑल्सो फाइंड some more PM opportunities, right? This is one way. Second is there are many other websites and platforms for getting internships like Internshala. पहले एक Angel था, I think it is now the name has been changed to I forgot the name, Wellfound, I guess. Right. So these are one or two some good platforms for getting internships. Second, one more thing is कि there are few product management communities. Like very famous one is the product folks. Right. I think the founder of product folks had come to our college few months back for a workshop. It was done through ESET. So these product communities they generally operate on Slack and they have a Slack channel of PM opportunities. So वहाँ पे भी you can get a lot of product management opportunities. Right. But one more thing is that most of these product management opportunities which you will find on these Slack channels and LinkedIn, they are not that much into a big startup और उनका उतना ज़्यादा stipend ऐसा कुछ नहीं होता. So to get bigger PM roles, you need to do a thing called networking, right? So like it can be if you want, you can dive deep into it in future as well. So, certain एक और initial चीज बस ऐड कर दो इसमें, मैं भूल गया था
तो जैसे स्वप्निल ने कहा, ये तो तरीके हैं। एक और तरीका है कि भाई अगर बिगर कंपनीज को अप्रोच करें, यू शुड प्रोबेबली स्टार्ट डूइंग दिस जब तुम्हारे पास एम्पल स्टार्टअप एक्सपीरियंस हो, या तुमने अच्छा अंडरस्टैंडिंग ले लिया है पीएम का, पीएम काम क्या होता है। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज, तुम्हें जो कंपनी पसंद है वहां अप्लाई करो। ये तो ये है कि जिनकी जॉब पोस्टिंग है वहां अप्लाई करो। तो वो कैसे करोगे कि बहुत सारे फंडिंग कंपनीज होते हैं, तुम्हें पता होगा कि बहुत सारे वीसीज होते हैं, जैसे सिक्वाया हो गया, टाइटन हो गया, बड़े बड़े वीसीज जो हैं, ठीक है। तो उनका वेबसाइट में जाओ, ठीक है, वहां देखो कौन कौन रिसेंटली फंडेड है, ठीक है, बड़े बड़े स्टार्टअप सीरीज बी के ऊपर, ठीक है। तो वहां तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि यूजुअली आफ्टर फंडिंग हायरिंग फेज शुरू होता है स्टार्टअप्स में और कंपनीज में, ठीक है। तो वो वाला चीज को तुम यूज कर सकते हो। एक और तरीका है कि जो कंपनी तुम्हें पसंद आ रहा है कि मुझे ये कंपनी पसंद है, यूजुअली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अगर कैंडिडेट पसंद आता है तो बिगर कंपनीज एंड यूनिकॉर्न्स दे कैन क्रिएट, ठीक है। तो वहां पे तुम क्या करो कि अप्रोच करो उनको बाय मेलिंग एंड लिंक्डइन में उनको उनके एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज में मैं मीन कर रहा हूँ कि पीपीएम या डायरेक्टर ऑफ पीएम, वीपी प्रोडक्ट, ऐसे सारे लोगों को मेल करो, ठीक है, या फिर उनको लिंक्डइन पे कनेक्ट करो। अब आगे बात बढ़ती है बनती है तो यू कैन जॉइन देयर। बट ये चीज तुम तब करो जब तुम्हें डिसेंट नॉलेज हो जाए पीएम के बारे में, ठीक है, एंड दिस कम्स आफ्टर एक्सपीरियंस। Any add-ons, or we can move to audience questions? Yeah, I guess we can move to audience question. Guys, you can switch on your mics and ask your questions or type it in the chat. And it's preferable if, like, you can also turn on your camera while asking the question. कोई डाउट नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? अरे I guess the hosts तुम लोग भी तो पीएम ही कर रहे हो ना? You guys must have some question. अब मेरे को लिंक्डइन वाला ही है, मैं भी आता हूँ। मुझे एक क्वेश्चन था, आई डोंट नो इफ यू हैव एड्रेस्ड इट बिफोर। मैं डिस्कनेक्टेड हो गया था 5 मिनट ले। सो लाइक आप लोगों ने इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो बता दिया, बट उससे पहले क्या क्या स्टेप्स होते हैं ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज के? रेज्यूमे सिलेक्शन या फिर कोई आई मीन मेंटल मैथ्स का राउंड या फिर क्या होता है, जीडी? So Swapnil, you can go ahead because उसमें वो एप्री राउंड भी हुआ था तुम्हारा। हाँ, so like Priyansh, it generally depends on company to company. For AIDAS it was an aptitude round जो कि generally analyst वाले में भी पूछते हैं। So aptitude में you need to just prepare PNC, probability, statistics, like there are a few topics around it. So basically you need to improve your speed because जो questions पूछते हैं, like if given unlimited time you can easily solve it. Like the criteria is see how fast you can solve those questions, right? So aptitude is one of the ways. इसके अलावा like GDs भी होती है, but I do not remember any company coming for PM role and asking GD. But yes, you can like be mentally prepared. They can also take some GD round. Right? And to be on a safer side, you can also have a background in SQL, right? Because PM में data analytics का role आता है, तो if you have it as your skill, then it is to be good because कोई analytics company they ask SQL questions. बाकी Nimisha and Utkarsh can add on. Yeah, so for stealth there was a resume shortlisting and there was a Google form filled out कि you have to answer some questions regarding product management, your resume, and what do you think about the company, why do you want to work, or what do you expect from the internship. So after that round we got selected for the interview. So first round was kind of the resume selection and the Google form, and then we got to sit for the interview round. So it depends vastly upon the companies,
Like for supply chain companies, generally they do the shortlisting through resume based or some apti, and then they go for GD, and then they could like go for further interview round like for HR and all. So it depends mostly upon the company. So what do they want? Like Yeah, as mostly you it's said the about same. resume selection. So resume yeah. कैसे select होता होगा मतलब what they for PM basically. सी टीपीसी तुम्हें बोलेगा अभी थोड़ी देर में या आई गेस इंटर्न से स्टार्ट होने से पहले कि यू हैव टू सबमिट द रिज्यूमे ऑन द टीपीसी पोर्टल. So there is a resume builder in the TPC website. There you have to fill all the details, the projects, POR, the internships, or any achievements that you have done. So you have to incorporate all this in your resume. और फिर ऐसा होता है कि कंपनी एक POC अलॉट करती है TPC को. That POC has the responsibility कि वो सारे जो willing candidates हैं उनके resume वो hiring team तक पहुंचाए उनकी कंपनी की. Then it's upon the company ki how they do the resume shortlisting. Maybe you can just ace for ki your resume skills are very good. You are like mentioning the certain metrics ki how did you kind of lead the impact on your projects, or फिर कि what were the major achievements of you. Do they like have you any internships, yeah, have you any startup experience. So these all kinds of things like matter most for the company. Like if you have a great amount of projects, or if it is an impactful, then the company would obviously like prefer you over others. इसी पे मेरे को एक फॉलोअप क्वेश्चन था कि टेक्निकल बैकग्राउंड होने से क्या फायदा मिलता है? For example, just say कि if you have one person with 10 banana and one apple, and there is a person with only 10 bananas, which would you pick? So it's just about that कि यदि कंपनीज को डिफिकल्ट हो रहा है कि पीएम वाले को चूज करने के लिए, देन दे वुड प्रेफर कि इफ यू हैव सम टेक्निकल नॉलेज, सो देन दे वुड हायर यू. So what happens with me कि I was from a technical background कि I did SD for 2 years, so that kind of I think helped me in acing the interview. Like they also go through कि what you have done in the past. So I guess yeah, getting a technical background is an edge, but you can't only rely upon that key. You just have a technical knowledge, so you would just pass the interview round, because they are at the core they are not hiring for the technical person. They are just focusing key, do you have the product sense with it or not. So it's good to have skill, but not mandatory. Uh, Satvik Trivedi is asking what other skills can be developed to get an edge in PM interviews. Speaking skill, first of all, you have to talk straight for 3 hours with them, okay, and you सात्विक have to माइक खोल just के पूछ. uh, yeah, so you can start speaking from here only कि हाँ, वैसा माइक रहता ऑन है करके कि पूछ. you have to speak continuously for 3 hours, okay, and you have to like act smart also. कि you have to incorporate some company's value in your conversation. कि tell me about a time when you face some difficulty. So you have to incorporate some company's value. Like you have to get smart with the words you are speaking. Okay, so like your words are like golden jewels for you. कि let's say you are incorporating some company's value कि I'm kind of a teams person, I believe in diverse environment, and then yeah, like using these values I dealt with the situation. So like they would think कि obviously you are faking or exaggerating it, but yeah, they would think कि okay, this person has a greater culture fit for our company. So that's what I think ki, the art of speaking is matters the most. Also ki yes, many people exaggerate, or let's say some kind of do like put some fake points on their resume, but it depends upon the person. Ki how do they are defending their points. If you are like going in the right direction, then yeah, it's great for you. But if it's like you are arguing with the person, or let's say you are not listening to the person before you, then yeah, it would just backfire on you. So most important skill would be for product management would be your learning skill, yeah, speaking skill. Second would be obviously the product skill. Like they would get deeper upon ki, how do you think about the product? Why do you think? How do you think? Like all these W and H questions. कि why do you think कि इस industry में ये दिक्कत है? They could also come up with some case questions कि okay, so I can
go through your resume, I can see that you have been following fintech industry. So tell me about a market trend that you are seeing in the industry, or let's say what are some government regulations in this sector, or let's say what are the how the companies are performing in this. So I guess you have to just what you have written, or it just depends upon your skill ki where do you want to take the interview. मेरा एक Yes. क्वेश्चन है, Mhm. लाइक मतलब मैं चाहूंगा कि एक बार आप चारों लोग ही इस पे अपने व्यूज दे दो। अभी जैसे मैंने काफी लोग का देखा है कि अभी जुलाई एंड में आई थिंक या अगस्त में स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा हमारे इंटर्नशिप टेस्ट वगैरह। तो सबको अभी हो रहा है कि लाइक हमारे पास नॉलेज नहीं होती, हमें पढ़ने की ज़रूरत है वगैरह। और अगर कोई जैसे इंटर्न अपॉर्चुनिटी आती है तो मैंने देखा कि लोग मतलब उसको डिनाई कर रहे हैं कि यार अभी हमको नॉलेज की ज़रूरत है तो अभी हम इंटर्न नहीं करेंगे। और आई थिंक एचडी के लिए मैं कह नहीं सकता, उसमें ऐसा हो सकता है कि नॉलेज गेन करना पहले ज़रूरी हो। बट जो मेरा पर्सनल व्यू है वो ये है कि प्रोडक्ट में वर्क एक्सपीरियंस शुड बी बेटर देन गेनिंग नॉलेज। बट लाइक आप लोग के क्या व्यूज़ हैं इस पे? अगर अभी मेरे को जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है 6 वीक्स एक इंटर्न करने की, Mhm. तो क्या मुझे वो करनी चाहिए या मुझे खुद से केस स्टडीज वगैरह और कोर्सेज करने चाहिए, जैसे स्क्रम और कैनबैन वगैरह क्या होता है ये सब? So देख मैं it बताता would be हूँ best कि तुम इसमें। दोनों कर लो। दिक्कत क्या है? Let's say you नहीं if you मतलब are ऐसा है कि रफली अगर मैं बताऊं तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक प्रैक्टिकल जॉब है, ठीक है। एसडी तुम अभी भी कोडिंग करते हो, कंपनी जाके भी कोडिंग करोगे। प्रोडक्ट मैनेजमेंट तुम्हें पता नहीं कि अभी तुम केस स्टडी कर रहे हो, वहां जाके तुम्हें डेटा का काम पड़ सकता है, ठीक है। तो इसका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है कि तुम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो। इसीलिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल्स में जो कंपनी आती है वो भी देखते हैं कि तुम्हारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। और मोर और लेस जब तुम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रहे होगे, सपोज मुझे ऐसा तो नहीं है कि हमेशा डेटा का काम पड़ता है, तो दे गिव मी मार्केट रिसर्च वाला काम भी, ठीक है। तो वहां पे केस स्टडी के सारे एस्पेक्ट्स धीरे धीरे कवर हो रहे होंगे। या फिर अगर मैं ब्रॉड लेवल पे कहूँ तो मैं एक प्रोडक्ट के लिए पीआरडी ओन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब तुम पीआरडी ओन करते हो, दैट वेरी डेफिनेशन ऑफ ओनिंग पीआरडी, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाता है। मुझे प्रॉपरली जानना है उस प्रोडक्ट की कैपेबिलिटीज क्या है, मुझे जानना है उस प्रोडक्ट में आगे क्या डेवलप हो सकते हैं। तो वो एक इटसेल्फ 2-3 केस स्टडीज का कंपाइलेशन है, ठीक है। तो इसीलिए सबको ही कहते हैं कि पीएम में तुम वर्क एक्स लो, जितना लोगे उतना सीखोगे, ठीक है। तो या अगर तो मिल नहीं रहा है, जब तक मिल नहीं रहा है तब तक तो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। केस स्टडीज दबा के करो। पीपल आई नीड टू ड्रॉप अप अभी। मैं मेरा नंबर मीट के चैट में डाल दे रहा हूँ। इफ एनीवन विशेस टू टॉक मोर अबाउट दिस यू कैन कांटेक्ट मी। मेरे थैंक यू को एक भैया और सो मच क्वेश्चन फॉर था। जॉइनिंग द सेशन। हाँ, 1 मिनट भैया, एक बस कैन यू प्रेजेंट द मोमेंट। हाँ, जस्ट अ सेकंड भैया, लीव करने से पहले एक बार आपको मोमेंटो प्रेजेंट कर देता या श्योर। हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ हाँ। यस। थैंक यू भैया फॉर जॉइनिंग द सेशन। थैंक्स टीम, इट्स अ रियली नाइस इनिशिएटिव। आई जस्ट होप कि लोग इससे सीख के आगे अच्छा इंटर्न करें, एंड जब उनको सक्सेसफुल देखेंगे तभी हमारा ये सेशन आज का फ्रूटफुल होगा, वो बता पाएंगे। क्योंकि एज ए पीएम वी हैव टू ट्रैक बाय सम मेट्रिक्स। तो हमारा मेट्रिक्स तो यही है कि यहाँ से कितने लोग निकल के जाके इंटर्न फोड़ रहे हैं। तो दैट वुड बी अ बेटर, क्या कह सकते हैं, बेटर रिवॉर्ड फॉर ऑल ऑफ अस। या सो विश यू ऑल द बेस्ट आगे के लिए, एंड शेयरिंग माय नंबर। मेरे को एक क्वेश्चन था कि आपने जो स्वप्निल भाई, आपने जो लिंक्डइन की बात की तो उस पर आपने बोला प्रोफाइल मेंटेनेंस और नेटवर्किंग। इस पर थोड़ा इलैबोरेट करोगे क्या? मेंटेनेंस का क्या मतलब है? By profile maintenance, that basically means having a decent LinkedIn account. And decent LinkedIn account मतलब कि जैसे अभी मैं किसी का भी रैंडम LinkedIn अकाउंट खोलूंगा तो उसमें जनरली क्या मिलता है, IIT BHU 2025, उसके बाद एक क्लब में PR और एजुकेशन एक्सपीरियंस, खत्म।
So like what you can do is कि for having a decent LinkedIn account, you need not have a proper work experience in PM. Like what you can do is just very simple things. कि एक जो तुम्हारा हेडलाइन है उसमें लिखो कि what are your interests, like कि if it is product management वो लिखो, है ना. Then have a decent about section, right? कि what are your interests, like which industry you are interested in, why are you interested in PM, right? And then coming to the experience wala part, जिसमें mainly at this stage you'd be writing about your PORs. So do not just write the PORs, but उसको elaborate भी करिए कि what exactly did you do in the POR, right? And do it in bullet form. कि 3 bullet में you are elaborating the work which you did, and use numbers, use like how much impact you created, right? What tools or what skills you used, right? These things. And lastly, there is a section called recommendation. So take recommendation from your seniors if if you do not have any personal experience, and if you know any professor well, so you can even ask him to give recommendation if that person is on LinkedIn. So these are few basic things which you need to do to have a decent LinkedIn profile. Why I am saying this? Because like I'll be very honest and blunt here that my AI Dash offer was revoked around April, right? So and intern season was starting uh, around 15th of May. So I had only 1 month of time to get another offer. And since I had a decent LinkedIn account, so I think within 1 or 2 weeks, I was able to back one more offer from funded startup, which was almost similar to that of AirDash. But since my offer was given, AirDash offer was given back, so I did not accept that. So having a good LinkedIn account is very important, because तब क्या होता है, you get opportunities. क्योंकि क्या होता है कि companies है ना, जो startups है, they also search for employees for who can work there. It is not always other way around. ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप ही अप्लाई करते हो and then the companies hire. कभी कभी and a lot of times companies have a proper team who are searching for employees in LinkedIn, right? And then they reach out to them and then they say we will offer you this sum. Are you interested? And if you are interested, they will take your interview and hire you. So that is why having a good LinkedIn account is very 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 important. Yeah, like I'll also add into the Sapnil's voice. Ki, yes, maintaining a good LinkedIn profile and a great social presence on the websites is like important. Ki you are like kind of commenting on the good post on the LinkedIn, and you are like posting your social skills, or let's say what you have done in the past. Ki if you have completed any case study, what did you learn and how much impact did you create? So you can just kind of post it on the your LinkedIn. And you can also, like, if you have done any recent product tear downs or any case study and you have won anything, or let's say you have any even if you have learned anything from any book or let's article, you can just curate a kind of summary for them and post it on the LinkedIn. So like the as Swapnil said, ki there are some hiring teams that they are looking on the LinkedIn profiles, and they are thinking ki yes, कि ये बंदा लर्निंग के लिए फोकस्ड है, आई कैन सी हिज लिंक्डइन प्रोफाइल, सो दैट्स व्हाई आई थिंक we should connect with them. So like it happened with me also ki before on campus opportunity of stealth term, I had around 3 intern opportunity like in my hand. Ki I just have to say yes and it would be done. तो इसलिए कि important, and I guess 3 out of those 2 interns were just like they got to know me from my LinkedIn profile. So that's why it is important ki for even if you are sitting only for on campus internship, I would say कि rather than focusing on uh, कि resume पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने से के साथ साथ तुम LinkedIn प्रोफाइल को भी like improve करो. लाइक देवर आई गेस कि मैं एक तो रैंडमली काफ़ी कनेक्शंस भी मिल जाएंगे तुम्हें लिंक्डइन प्रोफाइल यदि तुम्हारी अच्छी है तो. लाइक आई गॉट टू गेट सम कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूएस पीएम ऑल्सो. ए प्रोडक्ट मैनेजर फ्रॉम गूगल ऑल्सो टॉक विथ मी ऑन माई डीएम कि hey I liked your approach on this deck, could you also elaborate कि how did you find this solution, ऐसा कुछ. So इसलिए it's important कि तुम how do you present yourself. You can also post your portfolio link. Like if you create a portfolio link on Notion, you can just post it on the LinkedIn key, hey, this is my portfolio. So then any active recruiters will just click your portfolio, and they got to know all about you, all the your like in your like all things you have done, you can't show on your LinkedIn, so you have to show it on your portfolio. So like giving them the link of your portfolio, like they've got to know a lot more about you. Like
I guess I got a recently around 1 week ago. I got a Insta DM कि hey, I am a product manager at this company. I got to know your social link from your portfolio. I don't know where it got to know me, but ऐसा था कि उसने कहा कि मुझे तुम्हारे portfolio link से तुम्हारे Insta का account मिला. So that's why कि कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं, कितने लोग तुम्हारे पोर्टफोलियो या लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहे हैं, तुम्हें आइडिया नहीं है, बट तुम यही फायदा है कि तुम उसको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहोगे तो काइंड ऑफ एक टाइम पे पे ऑफ हो जाता है. तो इसलिए कि और वैसा एक और चीज़ प्रोडक्ट की है कि इट जस्ट काइंड ऑफ नॉट लाइक ए स्टीप कर्व, इट जस्ट लाइक ग्रेजुअल इंक्रीजिंग कर्व. सो तुम्हें स्टार्टिंग में कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे कि वाई यू आर वेस्टिंग सम टाइम ऑन मेकिंग पोर्टफोलियोज, ठीक है, वाई आर बिल्डिंग लिंक्डइन प्रोफाइल, बट एट लास्ट की लाइक वन यू रीच द पिनेकल काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज अपने आप आने लगती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि यदि तुम एक इंटर्नशिप यदि अच्छी कंपनी में कर लो देन अगेन आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी ईजी हो जाते हैं. लाइक इफ़ यू मेंशन कि आई वर्कड एट जोमेटो, ओके आई वर्कड इन ए यूनिकॉर्न, आई या लेट्स से आई वर्कड इन ए डिफरेंट स्टार्टअप, तो एक वर्क एक्स भी काफ़ी एज देता है. सो डेट्स वाई ऐसा है कि एक बस एक बैरियर क्रॉस करने के बाद सारे अपॉर्चुनिटीज वापस से खुल जाती है. सो आई वुड से कि गेटिंग योर फर्स्ट इंटर्नशिप इज more harder than cracking a second intern role at any unicorn. Since we are almost running out of time, Sorry. like audience, this would be the last option, last chance to Question. ask a question. So if anyone has a question, you can ask now. Okay, so I guess I we guess can end the session here. we can move Yeah. towards the end. So before ending the session, like I would like to express my gratitude to all the panelists for their time and insightful advice. And also we would like to present you with uh, an e-memento as a token of our gratitude. So Nimisha Didi, like Avinav, if you can take a screenshot of the screen and Nimisha Didi. I'm trying. Smiley Misha. That's not handy from my side. Okay, I'll just take the screenshot. No worries. Yeah. 3, 2, 1, cheese. Yeah, done. Okay. Next, Swapnil Bhaiya. Smile, please. Smile, bhai, smile. Yeah, dash. Thanks. Yeah, done. And lastly, Utkarsh Bhaiya. Thanks, guys. स्वप्निल से AI. ले लिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने खुद का. So So I guess thank we you can end the everyone. session. Thank you everyone. Yeah, it was great to talking with you guys. और ऐसा था कि पिछले साल मैं ये मीट ज्वाइन कर रहा था एज ए अटेंडी एंड नाउ आई एम अ प्रेजेंटर इन द मीट. सो या, इट वाज ग्रेट. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो. मतलब भैया हम दोनों का कुछ वो सिग्नल दे रहा है. अगले साल हम करेंगे. Yeah, great experience, great initiative. Like, please keep doing this और placements के लिए भी करो. That is also important. And good questions. अभी कोई doubt है कुछ हो तो like just ask. मतलब on chat या कैसे भी call करके. Just don't hesitate. Ask जैसे भी पूछना हो. Yeah, okay, so I guess we Thank can. you everyone. Bye bye. Bye. All the best, guys.